Good morning, everyone. Good morning, Bhagishri. Good morning, Namratna. Good morning, Bhakti. Good morning, Nisha. Good morning, Kushi. Good morning, Pragati. Good morning, Yogesh. Welcome, Yogesh, who are joining for the first time. Good morning, Bhagishri. So happy to see you. Can you just switch on your all videos? Because I want to see you how you're looking, how you're feeling, and how the things are going on. Can you just stop videos? Can you just switch on your videos? I request all of you to switch on your videos because it is very important for me to see you guys before wasting time. Let me just start our session. Good morning, Yogesh. I'm seeing you for the first time. Yeah, hi, good morning. I'm first time for this session. Yeah, so good to see the new joinees always. Hi Sonia, good morning. Good morning, Dr. Manvi. So good to see you. Uh, so how was the things? How was the yesterday? Were you how was the were you able to be with your inner child and was a little bit thing? Let me start my PPT. All right, so welcome to the day 2 of our, again today will be the more mind blowing session. You will be going to something which you never realized कि आपकी उसमें है. But before going into the thing, just like how was the yesterday? कल का आपका how was the thing at your end? How was the feedback? Okay, was it powerful session? You got many realization or you enjoyed it or you like सो गए यार sleepy? What did you felt sleepy? Did you felt boring? Was it difficult to face your inner child? That is the biggest thing. क्या मुश्किल था आपके inner child को face करना? Or does any memories of childhood flash into your entire मतलब पूरे दिन में कभी ऐसा हुआ कि बचपन की कुछ याद आ गई हो? Believe me, अगर वो याद आई है तो आपका inner child आपसे बात करना चाहता था, वो किसी reason से आई थी. Did you feel peaceful with yourself, happy and love, or you didn't remember anything? Can anyone just unmute your own self and tell me how the things were? Anybody can, who attended yesterday's session. Before I go forward, yes, please. Anybody can unmute and tell how was it yesterday? क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि कल क्या कैसा फील हुआ था. It's a very safe place. Come on, you can share. भाग्यश्री, योगेश आपने अटेंड नहीं किया था. डॉक्टर मानवी, श्वेता. Yeah, in the morning itself, the past was popping up, and then finally done some meditation and busy in the work. And then it was relaxing in the evening. Yes, it's true that whatever has happened is fine. We have to let go the past. So in the evening, I slept at around 8:39 so that I can wake up easily. So it was good experience. I thought ki this healing, it should takes place for a longer period, because only for one session it's not like कि पूरा complete हो जाता है. So you keep on continuing these sessions for us. Yeah, absolutely. See, that's what you have said very correctly. The healings need to be continued. I'll just give you the very example of healing is equivalent to सफाई. आप दिवाली अपने घर की अगर आप दिवाली की सफाई एक बार में करने जाओगे तो you will be tired like anything. एक दिन में आप पूरे घर की सफाई नहीं कर सकते. आप वो घर की सफाई तभी कर पाते हो जब आप डेली 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 क्लीनिंग कर रहे होते हो.
same way healings are like that. हम लोग I always say I'm 36. I have to heal my 36 years of you know not 36 5 साल हटा दो, पिछले 5 साल बचपन में नहीं याद होंगे, तो 5 साल से लेके अभी तक मुझे 50 years का वो क्लीन करना है. So definitely healing is something you have to do immediately and regularly, and it takes almost 4 weeks. I have another program में पूरा 1 month का healing program होता है. इट इज अ 1 month 4 week कंप्लीट जर्नी, जहाँ पे आपको हम लोग सब कुछ हील कर रहे होते हैं, आपके मदर फादर, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, वी हील लॉट मेनी पीपल, योर चाइल्डहुड, योर अडल्टहुड, योर टीनेजर. तो डेफिनेटली हीलिंग इज समथिंग कंप्लीट पैकेज जो आपको 4 week की जर्नी में मिलता है. In this 1 week, the boot camp, I can just make you aware and just try to unblock few little things. Like कल जो आपने देखा होगा inner child, आपने healing में देखा होगा, you just realize कि it was not the attention जो सामने वाला मांग रहा है, it was the attention and the love which your inner child wanted to. It was just they wanted, वो सिर्फ आपको एक बार चाहता था, एक बार आपको कोई चाहता था, कोई आपको सुन ले. Today again, okay, was it easy for others की, or was it difficult? Like कहीं ऐसे भी कि हमें कुछ याद ही नहीं रहा. Just remember one thing, अगर आपको कुछ भी याद नहीं रहा है, your mind has totally erased that memory. वो मेमोरी जो है वो टोटली इरेज कर चुका है, इसलिए वो इतने शॉक में गया है कि उसको याद ही नहीं कि क्या हुआ है. तो जस्ट इट्स परफेक्टली ओके अगर नहीं याद है, तो वी विल गेट थ्रू कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है. But you have to come to deal with it. Being an adult, it's your responsibility to deal with every damn situation in your own life. No one is coming and saving you. आपको कोई बचाने नहीं आ रहा. You have to take those steps because that is troubling you. वो आपको ट्रबल कर रहा है, तो आपको प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे ये जानने के लिए कि कहाँ पे क्या हील करना है, कहाँ पे क्या ब्लॉक निकालना है, ताकि आप वो ब्लॉक निकाल के आप आगे जा सको. Now coming back to the thing why healing is about, it's as simple as that. अगर आपको कहीं पे कुछ प्रॉब्लम होती है ना, पर्टिकुलर ऑर्गन में कुछ प्रॉब्लम है, पर्टिकुलर जगह पे ऑर्गन है, एक जाओ फिजिकल सर्जन के पास, मतलब एक नॉर्मल जो नॉर्मल डॉक्टर होता है उसके पास जाओ, एक जाओ स्पेशलिस्ट के पास में. दैट्स हाउ इट मेक्स अ डिफरेंस. कि जब आप स्पेशलिस्ट के पास जाते हो तब आप एकदम टू द पॉइंट जाते हो, टू द पॉइंट आपका हीलिंग होता है, वहां पे रहकर क्लियर करके निकल के यू जस्ट बिकम अ मोर हेल्थियर वर्जन. दैट इज व्हाट, जब हम हीलिंग की बात करते हैं, हीलिंग में बहुत सारी मोडालिटी है, होपोनोपोनो मोडालिटी है, आइफेज हीलिंग है, रेकी हीलिंग है, these are different kind of modalities I know as a healer. So 5 day boot camp में if I'm continuing with only one modality, because this is again cosmopolitan group, I don't know, some person might have been needing the Reiki healing, which I'll be taking definitely in this. Reiki is something extreme, जो एकदम extreme पे आपके चक्रा बैलेंसिंग के ऊपर काम करती है, सारे के सारे उसके ऊपर 26 एनर्जी सेंटर्स के ऊपर काम कर रही होती है, but definitely healing is something very important. आज का जो सेशन है, again today's session is all about knowing what trauma you are suffering. Like कल का जो सेशन था was knowing कि आपको बचपन से मिला है, जो आप फील करते हो, अपने बारे में सोचते हो, it is right from your childhood. Today's session is you will be just trying to know what trauma you are facing. Now coming to your this kind of a traumas, okay? अब अपने आप को ये देखना कि क्या होते हैं हमारे इमोशनल बिलीव्स और हमारे लिमिटिंग बिलीव्स बन जाते हैं. बचपन में हमारे साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होता है जिसके कारण वी एंड अप बिहेविंग दैट पर्टिकुलर वे थ्रू आउट अवर लाइफ. अगर हम उसको हील नहीं करते हैं, अगर हम ब्लॉक को पकड़ते नहीं है, उसको निकालते नहीं है, तो इट कम्स एज अ केयर टेकर ट्रॉमा. द नंबर 1 ट्रॉमा इज केयर टेकर ट्रॉमा. केयर टेकर ट्रॉमा तब आता है जब बच्चे माँ बाप के माँ बाप बन जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ योर मदर वॉज नॉट हर्ड इन द होम, आपकी मदर को सुना नहीं चाहता था, और योर मदर और फादर, इट कुड बी एनीथिंग, बिकॉज मदर वो नाती है, फादर वो नाती है, बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस इट इज द मदर सब जस्ट कमिंग. ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि आपकी मदर का घर में इम्पोर्टेंस नहीं था, फादर वॉज हैविंग द मोर वैल्यू इन द होम, एंड क्योंकि मम्मी को इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं था, मदर वॉज ऑलवेज अंडर दिस स्ट्रेस कि मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, मेरे को तो कोई अटेंशन ही नहीं देता है. Now, as a child, just imagine yourself as a 5-year child or some small child. उसको पता नहीं है कि क्योंकि बड़े आपस में नहीं सुलझा पाए हैं, your mother father couldn't understand how to solve those issues. Your mother just end up crying, playing a victim, और इमोशनली कि बहुत कि मेरा तो कोई वैल्यू नहीं करता है, मेरे तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मेरे को नौकरानी बना के रखा हुआ है. ऑल दीज आर द कॉमन सेंटेंसेस यूज्ड बाय इन सच सिनेरियोस. या फिर मैं घर चुप के चले जाऊंगी तब मेरी वैल्यू पता चलेगी, मैं मर जाऊंगी तब मेरी वैल्यू पता चलेगी. जस्ट इमेजिन, एक 5 साल के बच्चे को दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता है,
बच्चा सिर्फ अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, 5 साल 6 साल 10 साल जितना भी हो सकता है, और इट कुड बी इवन younger age, 2 years 3 years age. He or she just love the mother like anything, and the mother, what he does, he just start giving that love to the mother. वो मदर को प्यार देगा, सहलाएगा या केयर देगा, एंड मदर स्टार्ट enjoying that attention, that love, that care from that kid. Nothing wrong, there is absolutely right into that. But just imagine what the child will end up. The child will end up being a parent to their own parent, and the person, ये सारे grown up adult हमेशा फील कर, जो ऐसे बच्चे जो बड़े होते हैं ना, उनकी जिंदगी सिर्फ अपने माँ बाप के इर्द गिर्द घूम रही होती है. Being a grown up adult, they always feel that their life revolve around only and only their parents. कोई भी डिसीजन लेंगे पेरेंट्स से पूछ कर लेंगे, विच इज एब्सोल्यूट राइट, क्योंकि हम एक्सपीरियंस ज्यादा है, समझ सकते हैं. पर जहाँ पे वो डिसीजन आपके पेरेंट्स अप्रूव नहीं करते होंगे, यू विल नॉट टेक दैट डिसीजन इवन इफ दैट डिसीजन इज गुड फॉर यू. Just imagine and ask your own self, how many times you have just declined that job opportunity, you have just declined that proposal or the love of your life, you have just not joined that health program, or you have just not at all enrolled for that study program or whatever the things, because आपके parents नहीं approve कर रहे हैं, and you were under the constant caretaker trauma. My husband is a perfect example of it. He never left out from the home. I'm currently I'm in Baroda. I'm based in Baroda. He was never ever left Baroda. Reason that her mother always used to feel that insecure, because insecurity कि नहीं मेरा बेटा कैसे रहेगा, मैं कैसे रहूंगी. And the extremist case was, in the extreme cases mein, my mother-in-law was never in favor of getting her daughter married, because she always felt कि अगर मेरा लड़का बाहर चला गया तो मेरी लड़की तो मेरे पास होनी चाहिए. And both the kids feel कि it is our moral responsibility to take care of our mother, which is absolutely great. It has to be there. But now their life doesn't revolve much around, मतलब बाहर की दुनिया है नहीं, always around the parent, हमेशा मम्मी हमेशा पापा. That is how they are. So the adult grown up have this tendency कि मम्मी पापा के इर्द गिर्द ही जिंदगी घूम रही होगी, चाहे वो खुद 60 साल के हो गए होंगे. मम्मी पापा को अप्रूव करेंगे तो ही बोलेंगे अपने बच्चों. दिस इज हाउ द केयरटेकर ट्रॉमा कम्स इन. सेकंड थिंग इज ओवर अचीवर ट्रॉमा. आई एम द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ इट. फॉर एग्जांपल, ये ओवर अचीवर वाले कभी भी, ये कब होता है, ओवर अचीवर ट्रॉमा कब आता है, जब बचपन में आपको एप्रिसिएशन नहीं मिला होता है फॉर इवन द लिटिल अमाउंट ऑफ थिंग. मम्मी पापा को ग्रीटिंग कार्ड बना के दिया, मम्मी पापा ने जस्ट देखा, जस्ट थ्रो इट अवे. अब जस्ट इमेजिन 5 साल के बच्चे ने कितने प्यार से ग्रीटिंग कार्ड बना के दिए ना. आई यूज्ड टू डू दैट थिंग. वो ग्रीटिंग कार्ड बनाना उनकी एनिवर्सरी के ऊपर एंड ऑल दिस थिंग्स. मॉम डैड वाज जस्ट टू बिजी. उनकी गलती नहीं थी. फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर नॉट इमोशनली अवेलेबल, क्योंकि उनको लगता था हमें स्ट्रॉन्ग फेस ही रखना है, नहीं तो बच्चे कैसे स्ट्रॉन्ग होंगे. सेकंड थिंग, पापा वाज ऑलवेज बिजी इन हिज ड्यूटी, हमेशा ट्रांसफर हो रहे, सब कुछ चल रहे हैं. मम्मी मम्मी वी आर 4 kids, 3 sisters, 1 brother. Mummy is always busy in bringing the kids. She don't have time to get into such things. What we as a kid understand कि यार हम और अच्छा कैसे बनाए, how we do perform. इमोशंस, हमारे इमोशंस इतने प्यार से बना के दिए हैं पेपर पे, वो रद्दी में चले गए हैं. नाउ वी ऑलवेज सीक, अगर वो चीज, वो ग्रीटिंग कार्ड या जो भी मार्क्स आए हैं, जो भी कुछ है, किसी और ने अप्रूव कर दिया, वी यूज्ड टू फील वैलिडेटेड. ओ यस, हमने कुछ तो अच्छा किया, वी ऑलवेज कि कुछ अच्छा किया है. नाउ दिस ओवर अचीवर ट्रॉमा वाले के पर्सन में क्या होगा, दे आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर समथिंग. खुद BMW खरीदी है, लेकिन सामने वाले के पास, पड़ोसी ने अगर BMW वाले ज्यादा बेटर मॉडल खरीदा है, अरे उसके पास तो ऐसी आ गई है. दे दीज पीपल नेवर एवर रेस्ट. ये लोग कभी भी अपनी सक्सेस सेलिब्रेट नहीं करते हैं. द मोमेंट दे हैव सम कैच, कुछ सक्सेस, एक माइलस्टोन पा लिया, इमीडिएटली उनके अंदर फीलिंग आएगी बस इतना ही, मुझे तो और कुछ और करना है. ओवर आई एम, बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम दैट थिंग एंड आई एम ट्राइंग टू हील दैट थिंग. इसकी वजह से दे आर ट्रक लोड ऑफ स्ट्रेस लेते हैं अपने ऊपर. एंड उनका लिमिटिंग बिलीफ क्या होता है, आई एम नॉट गुड इनफ, आई हैव टू डू मोर, आई हैव टू डू मोर, मैंने जो किया है वो अच्छा नहीं है. एंड ये सारे के सारे एंड अप करते हैं परफेक्शनिस्ट में भी, बिकॉज अगेन परफेक्शनिज्म, अगेन ट्रॉमा. क्योंकि हम लोग हमेशा, as now as a healer I know that I have to celebrate my success. I have to make myself time, वो अपनी बॉडी को भी रेस्ट देना है. I have to give myself space and everything. नहीं तो उससे पहले क्या होंगे, एक कदम के बाद दूसरा कदम, एक टारगेट के बाद दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट, चौथा टारगेट, हम लोग बस भाग ही रहे हैं. They are always people running for the success, for the fame, for something, and they never feel satisfied. That is the reason they end up
abusing their body with stress, honestly speaking. And the only they feel कि उनको अगर लव चाहिए ना, तो दे विल बी ओनली लव जब वो लोग कुछ अचीव करेंगे। फर्स्ट क्लास में आए हो, जस्ट इमेजिन अ गर्ल जो जो शायद हम अपनी क्लास में शी माइट बी फर्स्ट में आई है, वो सेकंड आई है, बट शी विल बी ऑलवेज अंडर कांस्टेंट प्रेशर कि वो सेकंड आई है। बाकी बच्चों से मतलब आई एम श्योर बाकी थर्ड फोर्थ फिफ्थ होंगे, शी विल नॉट लुक इनटू दैट पार्ट कि वो कम से कम सेकंड तो आई है। अपने आप को और स्ट्रेस देगी कि मुझे फर्स्ट आना है, मुझे फर्स्ट आना है, मुझे फर्स्ट आना है, बिकॉज जब वो फर्स्ट आएगी तो ही मम्मी पापा प्यार करेंगे। So these kind of overachieved drama are person who was always and always behind success, ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ सक्सेस फॉर नो रीजन, मतलब वो सेलिब्रेट ही नहीं करते अपनी सक्सेस, छोटा सा पॉइंट होता है उनको सेलिब्रेट ही नहीं कर रहे होते हैं। अब इसी का उल्टा होता है अंडर अचीवर ट्रॉमा। अगर माँ बाप ने ये बोला है कि मतलब तुम लोग किसी काम के नहीं हो, तुम अच्छे ही नहीं हो, तुम कभी कुछ कर ही नहीं सकते हो, इफ द पेरेंटिंग हैज दैट काइंड ऑफ थिंकिंग कि बच्चे को जितना हम ये बोलते हैं ना कोल्ड टॉन्ट मारते हैं, तो टॉन्ट मार के अपब्रिंगिंग ज्यादा नहीं बढ़ाने का, पेड़ चढ़ जाएंगे, सिर पे चढ़ जाएंगे, ऑल दैट स्टफ, दीज पीपल एंड अप बिहेविंग अंडर अचीवर ट्रॉमा। उनको लगता है कि हम लोगों को हमें कोई नहीं देखना चाहिए। दे आर वेरी मच हैप्पी फीलिंग नॉट सीन। वो लोग कभी कभी भी पार्टी में जाएंगे ना, तो वो लोग एक कोने में पकड़ के बैठे बैठे होंगे। कभी भी क्वेश्चन एक गैदरिंग होगी, दे विल नेवर रेज अप देयर हैंड, दे जस्ट डोंट वांट कि लाइमलाइट उनके ऊपर आए, दे जस्ट डोंट वांट कि कोई उनको सुने। तो दीज काइंड ऑफ बिकॉज अल्टीमेटली दे हैव फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, क्योंकि बचपन में इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया है, उनको मिस्टेक्स के ऊपर इतनी डांट पड़ी है, और इतना उनका सेल्फ एस्टीम इतना डांटा गया है। अब ये डांटा गया है नॉट ओनली घर में बट पब्लिकली भी। जस्ट इमेजिन योर ओन सेल्फ और सम चाइल्ड जिसको पब्लिकली डांट पड़ गई क्योंकि उसने आइसक्रीम गिराती है खाने को, मतलब खाते खाते आइसक्रीम गिराती है। और जस्ट इमेजिन अ चाइल्ड जिसको मम्मी पापा ने थप्पड़ लगा दिया है बिकॉज किसी ने और ने कंप्लेन की थी, ग्राउंड में चलते चलते थप्पड़ लगा दिया गया है। दीज काइंड ऑफ पीपल, जस्ट इमेजिन योर ओन सेल्फ, एक 5 साल के बच्चे को बिल्कुल नहीं पता है हाउ टू प्रोसेस दैट इमोशन, उसके लिए सिर्फ क्राई इज द ओनली वे, या तो रो देता है और एक मेमोरी वो बना लेता है। ठीक है, और बड़े को ये समझ में नहीं आता है कि बच्चे की भी रिस्पेक्ट होती है, इवन द किड्स हैव द रिस्पेक्ट, क्योंकि बच्चा घर में ये देख रहा है कि बड़ों को इज्जत मिल रही है, बड़ों को जो भी दे हैव सम स्टेचर। Kid want that thing, kid just looking कि ये भी एक necessity है, but the kid is not getting that necessity, क्योंकि kid उसके just opposite ही feel करवाया जा रहा है उसको, या कर रहा है वो, and that is the reason they feel कि we are not at all, we cannot do anything in good, and क्योंकि ये इनको core belief इनका ये हो जाता है I am not good at anything, they will never ever take that step। इनको ना बहुत पुश की जरूरत पड़ती है being an adult। जस्ट इमेजिन योरसेल्फ, ऐसे सिचुएशंस में आप होंगे कि कोई कलीग होगा जो बस बैठा ही है, उसके लिए एग्जिस्टेंस ही नहीं करता कि मैं घर में मेरा क्या वैल्यू है, बाहर क्या वैल्यू, दे जस्ट डोंट फील लाइक एनीथिंग। ऑलराइट, सो दिस इज अंडर अचीवर ट्रॉमा, जस्ट सी फ्रॉम व्हिच ट्रॉमा यू आर सफरिंग बीइंग अ ग्रोन अप अडल्ट। अब ये होता है रेसिड्यूअल और प्रोटेक्टेड ट्रॉमा। अगेन this is one of the trauma I am suffering on a societal level. I'm from Haryana, and because in Haryana the girls have not been given that freedom. I don't know about the right now, but during my upbringing, it was not. It is a male-dominating society. So I always fear females को हमेशा दबा के रखा गया है. For me, that being a जो women's को empowerment, the reason I'm into women empowerment is maybe because of my old childhood trauma, my own vulnerability, my own possibilities of not being given equally valid opportunities and growth factors or the freedom which was given to my brother. And I have been very blessed. My papa Air Force में थे. I have been blessed in very culturally different cities में मैं grow हुई हूँ. कभी चेन्नई रही हूँ, कभी दिल्ली रही हूँ, कभी जोधपुर रही हूँ. तो वहाँ सबका मुझे influence आया है. But just imagine deep down मेरा core क्या था कि the values which I have got being a woman, like you have to be good at cooking, you have to be good at taking care of in-laws, you have to be good of X Y Z. एक जो societal बहू के image में होता है. If I am not melting into that thing, तुम पहले ये सारी रिक्वायरमेंट कर लो, बाकी सारी चीजें बाद में आती है। एंड आई एंड अप बीइंग अ पीएचडी, लाइक मैं पीएचडी हूँ, आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन आउटसाइड, आई एम वेरी सक्सेसफुल इन माय जॉब, आई एम अ सक्सेसफुल लाइफ कोच, आई एम सक्सेसफुल हीरो, बट उनका क्राइटेरिया क्या है, यही है। तो एक वो रेज अंदर आता है, उनका इमोशन क्या होता है, बेसिक क्या होता है, रेज। उनको लगता है कि ये जो प्रोटेक्टेड ड्रामा होता है बचपन में, फॉर एग्जाम्पल ये सबसे कॉमन होता है
बड़े भाई बहनों में, क्योंकि अगर बचपन में लगा दिया है छोटे वाले को, इनका लगता है कि हमारा काम है रक्षा करना। इनका बेसिक इमोशन होगा रेज, एंड द पीपल दे आर इन टू द रेज, रीजन इज दैट दे आर ट्राइंग टू सिक्योर देयर ओन वल्नरेबिलिटीज। अब आप किसमें आ रहे थे, ऑलवेज प्रोटेक्टिव, क्योंकि वो लोग दूसरे को हमेशा ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं, चाहे प्रोटेक्शन की जरूरत हो या ना हो, you end up protecting that person because of your own vulnerabilities. For example, if a woman is coming to me and just crying and telling me some soft story, I will immediately, consult with that woman, and I may always try to console her, give her that support. Reason that somewhere deep down, I'm trying to heal from my own vulnerabilities. If a male, being an adult, I'm telling you, if a male who is not in a good relationship with a wife or with a good relationship with a kid, you will always end up, having that protective cover or supportive cover to the same person who might not be in a good relationship with a spouse or good relationship with the parents or good relationship with the kids, because that's what you feel कि हमारा काम है प्रोटेक्शन करना। और क्योंकि वो प्रोटेक्ट फील करते हैं, दे फील एम्पावर्ड, दे फील कि हमारे पास वी फेल्ट पावर, एंड क्योंकि वो पावरफुल फील करते हैं एट दैट पॉइंट ऑफ अ मोमेंट, दे विल फील हील्ड। उनको लगता है उनके पास्ट मेमोरीज है, पास्ट ट्रॉमास में है, जो बचपन में उनके साथ ऐसा हुआ है कि दे जस्ट वांटेड कि समवन शुड कम एंड प्रोटेक्ट देम, एंड समवन शुड हैव देम अ फीलिंग कि नहीं यार, इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे दो, दैट काइंड ऑफ अ थिंग विल बी देयर। सो यू नो जस्ट इमेजिन प्रोटेक्टेड ट्रॉमा। इफ अ चाइल्ड इज 2 साल, 2 बच्चे हैं घर में, एक 5 साल का है, एक 3 साल का है। 3 साल की पूरी जिम्मेदारी डाल दी गई है 5 साल के ऊपर। तो 5 साल का बच्चा खुद एक 5 साल का है, उसको खुद कुछ नहीं पता है दुनिया के बारे में, बट द 5 साल का बच्चा फील एंड अप बिलीविंग that I am the parent of that 3-year child. And that's the reason they are always super protective for the younger ones, and they end up being possessive sometimes very badly, because they feel it is their right to protect them. It is their own kid. And now just see yourself, are you possessive in your relationship? If you are possessive in your relationship, damn possessive in your relationships, then definitely you are, suffering from your rescue or protected trauma. And same way, you will not allow your kid to explore. तुम्हें आप अपने बच्चों को क्या बोलोगे, डोंट टेक दैट स्टेप, तुम्हें खराब हो जाएगा, मतलब यू विल गेट वोंडेड या कुछ हो जाएगा, यू विल पुट योर ओन फियर इनटू द माइंड ऑफ योर ओन किड। बच्चे के पास वो फियर नहीं है, बच्चे के पास वो सिर्फ अपने माँ बाप को ही दिख रहा है, बट आपने खुद ने अपनी एक कहानी बना के रखी हुई है कि मैंने ये किया था तो ये हुआ था, या मेरे को ज्यादा पता है, हाउ टू प्रोटेक्ट दैट थिंग। वट एवर द स्टोरी यू आर टेलिंग टू योर माइंड, यू विल फीड दैट फियर टू योर किड्स माइंड। मेरे दिमाग में सबसे पहले जो डाला गया था, रात को नहीं जाना चाहिए, वेरी कॉमन फियर अमंग वुमेन दैट वुमेन शुड नॉट go alone into night. I'm staying in Gujarat, very safe place, and I have taken, many times I have picked up my husband from the airports at late nights, but without telling my parents, because if I tell my parents, immediately I go, "Itni raat ko tum kyun gayi ho?" Still, and I have to give the justifications, and I end up, having that fight here, ऐसा नहीं होता, डराओ मत, you should give me confidence. These are some common things, because if the elder sibling में बहुत common है, I'll give you my example, like मेरा husband is damn protective about उनकी जो sister है, मेरी sister in law, he is very damn protective, because 2 साल का फर्क है, but he always feel I'm the fatherly figure, I have to take care of that, my daughter, this sister-in-law, and sister-in-law comes and tells me कि भाभी बहुत चौकअप हो जाता है, भैया को बोलो कि मेरा अपना एक लाइफ है, but the भाई नहीं समझता है। This is how it happens. And people pleaser trauma, again, पीपल प्लीजर ट्रॉमा, अगर आपको ये पर्सन जो होता है, दे ऑलवेज फील दे आर सेल्फ सेक्रीफाइस। बचपन में उनको ये सिखाया गया, हाँ उन्होंने मतलब जस्ट कॉमन एग्जांपल देती हूँ, घर पे आए हैं, घर पे कोई मेहमान है, अच्छा चलो बच्चों को गा के सुनाओ। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू गॉन थ्रू दैट सिचुएशन? अच्छा चलो ये लोग मेहमान आए, इनको डांस करके सिखाओ। अच्छा सब मार्क्स लेकर आओ, एंड योर पेरेंट्स आर जस्ट टेलिंग मेरे बच्चे ने टॉप किया है। You have to look good, you have to behave good, you have to sing good, you have to write good. जब लोग तुम्हें अप्रूव करेंगे, ये लोग शुरू होते हैं रिलेटिव से, जब तुम्हें नेबर्स अप्रूव करेंगे, जब तुम्हारे रिलेटिव्स अप्रूव करेंगे, तो ही तुम कैपेबल हो, नहीं तो तुम कैपेबल नहीं हो। एंड दैट इज द रीजन द चाइल्ड एट दैट एज एंड अप बीइंग अ पीपल प्लीजर ट्रॉमा। फिर वो खुद सेल्फ सेक्रीफाइस में जाएंगे, उनको अपना मतलब थाली पे सजा सजा के दे देते हैं।
And what happens is, codependency pattern होता है. It is because we are engaged in deep codependency pattern. But as a caretaker, of course, caretaker तो उसमें ही हो रहा होता है. They only, they feel the only way to receive the love is to be good and selfless. These people are damn, weak in putting their boundaries. अगर वो अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहे होंगे किसी और के वर्सेस में, उनके अंदर खुद के अंदर एक इनर वॉइस है कि तुम कितने खराब हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो. If this is the talk going into your mind, you are suffering from people pleaser trauma. If the job opportunity is there with you, but you don't want to take that job, what means कि मम्मी पापा का कोई ध्यान कौन रखेगा? Immediately टिंग आएगा, तुम अच्छे बेटे नहीं हो, तुम अच्छी बेटी नहीं हो. If you just want to prioritize your job, you want to chase your ambitions, you want to chase your dreams, but your child is there, whom you might not feed one meal, or you might not be there when the child is sleeping. Immediately trauma आएगा, तुम अच्छी माँ नहीं हो, लोग क्या कहेंगे. एंड द पीपल अराउंड यू विल पुट अ ब्लेम ऑन, वो बोल के बताएंगे तुम अच्छी माँ नहीं हो, तुम अच्छे बेटे नहीं हो. एंड यू विल एंड अप, जैसे किसी और ने तुम्हें वैलिडेशन कर दिया, जैसे किसी और ने बोल दिया, यू विल एंड अप लाइक मेरे को डिसीजन नहीं लेना है यार, बिकॉज कहीं ना कहीं वो डीप में आपका हर्ट हो गया है, क्योंकि सामने वाले ने आपको अप्रूव नहीं किया है. यू स्टार्ट डाउटिंग योर ओन डिसीजन एंड गिव importance to that inner child or the inner trauma which you are suffering, and you don't take that growth which you wanted to take. People in such kind of situation will be in a, हमेशा bosses के उसमें होंगे, they always pleasing people. and in a common situation बताऊं तो, अगर आप social gathering में हो, तुम्हें नहीं जाना है उसमें, फिर भी तुम जाओगे, अंदर अंदर सामने वाले को you just want to punch it on the face, but you'll be nicer on front. Good etiquettes, but would have been better etiquettes जब आप ना ही गए. You can just simply say कि no, I don't want to come. My no, I don't want to come is enough without explaining. If that is the thing, then you are suffering from people pleaser trauma. So these are some of the common traumas. Apart from that, there are many traumas which we suffer in as an adulthood. जहाँ पे हम लोग we end up behaving that way. Now, please share आप में से कौन किससे सफर कर रहा है, because I am suffering from definitely the protected trauma, and that is the reason I tell you my personal experience. I was got into मैं legal troubles में आ गई थी because some women has came and told me the sob story, and उसने इतनी sob story बताई थी कि मुझे मार रहे हैं, पीट रहे हैं और घर से निकाल दिया है, I'm expecting please help me out and all those things. And then मैं पूरा रेज में आकर उसको सपोर्ट किया था कि नहीं नहीं मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी and all that thing, and at the end I just realized it was very close relationships in the family, and at that time realized she was trying to con my brother-in-law and ultimately they ended up into the divorce. But I got a very good bombardment कि तुमने उसको सपोर्ट किया था ना इसलिए वो divorce हुआ. I'm still suffering with that thing, and I just feel like that girl over there at that time. I really don't know what was the real story, but yes, I was carried away with her emotional story. But I am suffering from this rescue and protected trauma that I have to support the women who are totally suppressed into this society. I have to be that opportunity. I have to be that thing, which is a good factor that I'll be an opportunity to handhold someone, to give that flame, to give that hand, which is very important. But then the backside is there. Some people, all especially the women, might they just end up I then I felt like I end up feel being utilized for my own emotional, because deep down मुझे लग रहा था कि वो झांसी वाली रानी का अवतार आ जाता था कि that is one thing. And the most common trauma is people pleasing. Once you meet, अब ये क्या होता है जब people pleasing वाले में होता क्या, जब किसी को please कर दिया, किसी को satisfy कर दिया, at that point of a moment वो आपकी जो urge होती है ना कि आप validate, अपने आप को validate कर लेते हो. हाँ, हमसे कोई खुश हो गया ना, हम खुश हैं, हाँ सामने वाला खुश है, मैं भी खुश हूँ. You end up measuring your happiness in the happiness of others, and because you end up you are measuring, आपका scale जो है वो दूसरे की happiness है, आपको लगता है कि मेरा काम है सबको खुश रखना. और आप प्लीज एक्सेप्ट द फैक्ट दैट इंसान एक टाइम पे सबको खुश नहीं रख सकता है, और क्योंकि वो सबको खुश करने में चक्कर में पड़ा हुआ है, खुद को सजा सजा के देता है थाली में एंड ऑल दोस थिंग्स, उसको लगता है कि मेरे लिए तो कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, बिकॉज पीपल आर हैप्पी, दे व्हाट दे आर रिसीविंग, दे आर हैप्पी, एंड बिकॉज एट द एंड ऑफ द टाइम उनको लगता है कि मेरी कोई केयर नहीं कर रहा है. बट स्टिल नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड अगर ये ट्रॉमा हील नहीं किया जाता है, this end up into lot of a deep जो भी सालों से भरा पड़ा है, रखा है, these person will come to a stage where they will become extreme toxic.
they will just shut down their even moral responsibilities because they will feel कि the other people are using it. ये एक्सट्रीम केस है पीपल प्लीजर ट्रॉमा का. अगर पीपल प्लीजिंग रहे हैं, आप कर रहे हो 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 विदाउट पुटिंग योर बाउंड्रीज एंड यू फील कि सामने वाला मेरे लिए कुछ नहीं करता है, जब ये बहुत टॉक्सिक हो जाता है, the person not will not even take care of the moral responsibility including their own health. ये लोग डिमांडिंग होते हैं, गोलियां भी तुम दोगे, सब कुछ तुम करोगे, तो सामने मतलब दे जस्ट पुट मतलब थोप देते हैं अपने आप को सामने वाले के ऊपर, एंड दैट इज अ टॉक्सिक थिंग. एंगर एंड रेज डेफिनेटली इफ द स्टार्ट ऑफ इमोशन ओनली समवन, जब आपको गुस्सा आ रहा है एट दैट पॉइंट ऑफ अ मोमेंट, आपने गुस्सा कर दिया है, यू आर ओके, इमीडिएटली हो गया है, बट एट दैट नेक्स्ट पॉइंट ऑफ अ मोमेंट इमीडिएटली टेम्परेरी आपको रिलीफ मिल जाता है, बट नेक्स्ट टाइम कुछ और ट्रिगर हुआ, पास्ट मेमोरी आई, ट्रॉमा आया, ढक वापस से एंगर. इनको एंगर इश्यूज बहुत होते हैं. द पीपल विल ऑलवेज हैव एंगर और द रेज इश्यूज एंड डेफिनेटली डिसोसिएट. They, you just leave your body during a stressful event so that you don't experience trauma in the first place. ये सबसे पहले भागने वाले होंगे. और वो डिनायल, दे जस्ट कम्प्लीटली डिनायल. कंप्लीटली डिनायल मींस मुझे हीलिंग चाहिए ही नहीं, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं. If your mind is telling you that thing, this is the first time you need the healing, they just don't accept कि ये reality है. They just don't accept कि ये उनके साथ हुआ है. They just don't मतलब accept ही नहीं करते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है. And the first reaction is leave your body. सबसे पहले वो लोग वो सिचुएशन से भागेंगे. वो there are 44 people enrolled into this particular workshop, but how many are turning? Only 14 are turning, because rest of the time I'm sure there might be chances to busy अपनी morning में they cannot take it out time. Again they cannot take it out time because they are not feeling that they are worth enough of taking out time and attending some sessions. They are not feeling worthy. For them the others are important, and on that others, deep down they are not doing others happily. How many times you cook happily? How many times you clean the dishes happily? How many times you do the shopping happily? How many times you are doing the daily course happily? You are just doing with the set of the mind, I have to do it because agar maine ye nahi kiya, I'll be labeled. How many times you are going to that job which is suffocating like anything, just because at the end of the day it is bringing the security to your family, and you just cannot tell to your spouse that I'm not happy into this job. How many times you do that? Because deep down you feel कि उनका वैलिडेशन मेरे कैपेबिलिटीज, मेरी क्रिएटिविटी और मेरे खुद के वर्क से ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हाउ मेनी टाइम्स यू फील दैट वे? And anybody can unmute and just share how was it, because I know these are something eye opening. Even जब मुझे पता चला था, oh my goodness, मुझे लगा था मैं तो सारे ट्रॉमा से सफर कर रही हूँ, मैं किस किस को हील करूँगी. I was into that state कि ये भी था, ये भी था, ये भी था, ये भी था. But then I realized this is the biggest thing I have to channelize first thing. So anybody can then this, I think this was the last time. Okay. Yes. Okay, I'll just send. Okay. Before going into this thing, identify which trauma this is the assignment. I'll definitely send on the WhatsApp message also. If you are making, are you making what was abnormal or normal? For example, yelling at home, treating your kids, treating anybody at home with disrespect is abnormal. You just cannot talk shit to anybody, including your child. But if you have been raised into the family जहाँ पे abusive language use की गई है, physical abuse use किया गया है to control the child, and it is normal, आपको लगता है कि यार husband wife में तो झगड़ा तो चलते ही रहते हैं, you how many that's not normal. Absolutely that's not normal, especially when you are a grown up person, and not at all normal with a grown up person. मतलब adult के साथ में तो बिल्कुल नहीं, child के साथ तो बिल्कुल ही नहीं है. But you end up feeling ये तो normal ही है, हमारे घर में तो बहुत common था. And the people, especially if they have seen physical abuses in their home with their parents, they end up into being in a physical abusive relationship with their spouses, and they will not leave that relationship, abusive relationship, at no matter what, because for them it is normal. उनको लगा मम्मी पापा के बीच में भी तो ये होता ही था, मार खाई है, झगड़े हुए हैं, शब्द गलत. And abusive doesn't mean physical. Abusive also mean mental. The abusive, mentally abusing, right? Bringing the parents, grandparents, इसकी अपbringing सब कुछ लाके आपको वो किया गया है.
If you feel that it is normal, it is not at all. If you are feeling like आप abnormal को normal बना देते हो, then definitely you are suffering from trauma. If you are, are you protecting, and then are you protecting those who cared for you out of embarrassed honor or guilt? आप जिनको protect कर रहे हो, आप शर्म के मारे प्रोटेक्ट कर रहे हो, ऑनर के लिए प्रोटेक्ट कर रहे हो कि नहीं मैं प्रोटेक्ट करूँ, चाहे सामने वाले ने कितनी भी गलती की हो, गिल्ट किया हो, कुछ भी हो, आपको कैसा भी फील कराया हो, बट यू स्टिल एंड अप प्रोटेक्टिंग देम बिकॉज डीप डाउन यू आर सफरिंग फ्रॉम दैट प्रोटेक्टेड ट्रॉमा. आपको लगता है कि आपका काम ही है लोगों को प्रोटेक्ट करना, नो मैटर हाउ मच दे कैन. एंड द पीपल इन दिस केस, देयर वुंड्स विल बी ब्लीडिंग, दे वोंट लीव इट. चाहे बच्चे कैसा बिहेव कर रहे हो, माँ बाप कैसा बिहेव कर रहे हो, स्पाउस कैसा बिहेव कर रहा हो, कैसा भी बिहेव कर रहा हो, their wounds are always bleeding because कुछ ना कुछ ट्रिगर होगा. they will not take a stand, they will end up, and at the end of the day वो रेज आएगा, एंगर आएगा कि मैं तुम्हारे लिए इतना करता हूँ, करती हूँ, तुमसे कुछ नहीं करते हो. आर यू डिनाइंग दैट फीलिंग इज पॉसिबल? जैसे आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपको बहुतों को लगता है ये पॉसिबल ही नहीं, ऐसी कुछ चीजें होती ही नहीं, नथिंग लाइक दैट. Are you avoiding the bad memories that you must comfort and expert? This is the bad thing, I have my own personal experiences where I just feel like I don't want to talk about it, you know. And before enrolling into ICH, I was like, this is inner healing. I don't want to take that course because deep down मुझे पता था कि ये मेरे वो parts छेड़ेगा, ये ICH healing, inner child healing मेरे वो parts छोड़ेगा जिनको मैं दबा के निकल चुकी हूँ. बट मैंने उनको हील नहीं किया है, मैंने सिर्फ एक परत चढ़ा दी है कि यार ठीक है, मुझे आई एम इग्नोरिंग इट. बट कैन यू जस्ट इमेजिन समथिंग यू आर इग्नोरिंग इट, इग्नोरिंग इट, इग्नोरिंग इट, इट विल पॉप आउट इनटू सम और अदर फिजिकल फॉर्म. वो कहीं ना कहीं आपके फिजिकल फॉर्म में आना ही आना है. यू जस्ट कैन नॉट इग्नोर योर वुंड. जो वुंड है, you have to heal it, you have to get through, you have to go. It this is really, you have to dig inside, take it out from that and just go away. I am just done with this thing. So if you are having the bad memories, लोग कितनी बार आप ऐसा बोलते हैं कि मुझे उस सिलसिले के बारे में बात ही नहीं करनी है. If for example, if siblings are having financial disputes, प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा हो गया है, and you are not at all talking to your, अपने भाई बहन से बात नहीं कर रहे for example, so you will not, आप इतने शॉक या ट्रॉमा के स्टेट में हो कि आप बचपन की अच्छी यादें नहीं याद करोगे, आप वही इंसिडेंट्स बार 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 याद करो. एंड यू विल नॉट टॉक टू योर सिबलिंग. आपको लगेगा कि यार मैंने इससे बात कर ली ना, वापस से टॉपिक निकल के आएगा, और वापस से टॉपिक निकलेगा, ये मेरे को ट्रिगर करेगा, मैं एंगर में आऊंगा, रेज में आऊंगा या आऊंगी, एंड आई विल लूज माई पीस ऑफ माइंड. And because I will lose my peace of the mind, I will just ignore it. I will not talk it. I will not face that situation. हम उस situation face ही नहीं करते. Same, and what happened over the period of a time, you just end up बात ही नहीं करते अपने सिबलिंग से. या तो फिर आप दूसरे को भी क्या एडवाइस दोगे, देखो यार ब्लड रिलेशनशिप्स में ना बिजनेस नहीं करने का, ऐसे ऐसे सिचुएशन हो जाती है. या फिर मनी, यू विल एंड अप कि मनी तो रिश्ते तोड़ देता है. आप ब्लेम किस पे डालोगे? पैसे के ऊपर. यू मनी एनर्जी खराब करोगे कि पैसे की वजह से रिश्ते टूट जाते हैं, या पैसे की वजह से रिश्तों के सही सही मायने देखने को मिलते हैं. You will end up blaming money energy. Money is the root cause. आपको लगेगा पैसे की वजह से ये सब हुआ है, but it's not the money. It is something in your trauma, in your something had happened to your childhood, which has been healed, and because it has not been healed, it has not been processed. You end up blaming the money. You end up blaming the sibling. You end up into damn things. You are just avoiding that memory. And think of a situation. And yes, this is the thing. I'll give you an example, or you can just share. Think of the recently happened where you responded more strongly than you wished. आप नहीं चाहते थे इतना एंगर दिखाना, आप नहीं चाहते थे उस तरीके से बिहेव करना. You end up behaving that way, and then आप गिल्ट भी फील करते हो. If that is the situation, just imagine ये एक या 2 दिन की सिचुएशन ही करना, या पिछले 1 वीक की करना, and answer this question. Is it a regular occurrence? Are you just doing it regularly? क्या हुआ था, कब हुआ था, इमीडिएट फीलिंग क्या थी, तुरंत गुस्सा आया था, लेकिन वो गुस्सा क्यों आया था? जस्ट आस्क योर ओन सेल्फ. किसी ने मेरी बात नहीं मानी थी, किसी ने मेरी बात नहीं मानी थी क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशंस थी क्योंकि मेरे दिमाग में कंडीशनिंग थी कि ये चीज तो ऐसी ही होनी चाहिए, ये चीज तो ऐसी ही होनी चाहिए. कहाँ से आया था? क्योंकि मम्मी पापा ने, रिलेटिव ने, सोसाइटी ने बोला था ये चीज तो ऐसी होती तो ही अच्छा होता है. You are just behaving your old version of 20, 30, 10, 15, whatever that thought
जब वो मेमोरी डाल गई थी कि ये चीज तो ऐसी होती है. So just imagine your own self being an adult of 35, 36, 40, 45, 20, 25, behaving with the thought which has been put at the age of 5, 10, 15. I really don't know what incidence it was. Just imagine that thing. Where do you feel this is in your body? Definitely, this is extreme cases. Like one of my friend is there. She cannot move her वो जो अपनी गर्दन है ना वो अपनी गर्दन ऐसा 15 डिग्री से ज्यादा वो मूव नहीं कर पाती है. She has lot of a stiffness. यहाँ पे वो कॉलर मतलब जो पट्टा है वो भी बांध के रखती है. Reason is that she is damn adamant. वो शी इज दैट ऑर्डर एंड लॉ वाली है कि उनको लगता है कि यार मैंने जो बोला वही होगा. शी इज नॉट एबल टू बेंड विद द फ्लो ऑफ द लाइफ. रीजन इज दैट शी हैज अ पर्टिकुलर इमेज टुवर्ड्स लाइफ की लाइफ है तो ऐसी होनी चाहिए. एंड हमारे नेक जो होते हैं बहुत फ्लेक्सिबल बताता है. दिस इज फ्लेक्सिबिलिटी टुवर्ड्स अवर लाइफ. Okay, so just imagine because she's not ready to bend towards the flow of life. ऐसा कैसे हो गया है, ऐसे नहीं होता है, ये तो ऐसे ही होना चाहिए. मैं ट्राई करूँ वो लगी रहेगी लगी रहेगी लगी रहेगी. And that is the reason she end up having this neck stiffness ना sure मतलब उसको and she cannot just move. Now because of the healing session at least उसका वो 15 degree से 30 degree आया है. And I just see this becoming more open to receive more towards abundance and more towards okay, yeah, I have to let go. I just cannot control everything. And of course it comes to your throat chakra also because throat chakra blocked है तो खतरनाक ही होने वाला है. So that's again all this thing. Do you find you want to react or stay quiet or withdraw? How many times आपको लगता है कि चुप रह जाना चाहिए झगड़ा होगा? और how many times you feel just overreactive? ऐसा कैसे उसने मुझे बोल दिया? Anything. If your boss, अब ऐसे लोग जो होते हैं ना ये क्या करते हैं कि पॉजिटिव क्रिटिसिज्म नहीं लेते हैं. अगर बॉस ने ये बोल दिया कि तुम ये ट्रेनिंग अटेंड कर लो अच्छा होगा तुम्हारे लिए, उनको लगेगा आई एम अंडर परफॉर्मिंग. बॉस मुझे ऐसे कैसे बोल सकता है. या तो फिर अगर आप फीमेल होंगे, अगर किसी ने ऐसा बोल दिया कि डू दिस थिंग या खाने में आप ये इंप्रूवमेंट करो, ऐसे कैसे बोल दे मैं तो परफेक्ट खाना बनाती. दे आर टोटली इनटू डिनाइल एंड दे विल नॉट बी ओपन टू द पॉजिटिव क्रिटिसिज्म. पॉजिटिव क्रिटिसिज्म की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. हाउ मेनी टाइम्स यू फील दैट वे एंड व्हाट इज द सिचुएशन फ्रॉम योर पास्ट डज दिस रिमाइंड यू. और ये कहीं ना कहीं तो बचपन में आपका ट्रिगर होगा ही होगा. एंड दैट वाज द थिंग बिफोर आई एंटर इनटू द हीलिंग फॉर दिस थिंग. सो एनीबडी कैन शेयर वाज इट ब्लोन अवे, कुछ मिला या कैसा लगा? एनीबडी कैन अनम्यूट एंड जस्ट शेयर योर एक्सपीरियंस. Because this is interactive sessions, please. Yes, Yogesh, Nitin ji, Bhagyashri, Dr. Manvi, और वो लाइक पूरा बहुत ऊपर से गया है, बहुत ज्यादा हैवी था यार. ये कैसा हो गया? Were you able to identify your own self in any of the traumas? Sonia, I'm Nisha. Yes, hi So, Nisha. am I clear? Yes, yes, My voice is clear, audible? yes, yes, yes. Okay. So fine. The things you were telling, like, yeah, we all have gone through all of, I don't know, but yeah, overprotective kind of, or you're not ready to. So I was like always open to learning. I was not a person that not hiding herself or something like that. So I am always open to learning, but overprotective, yes, that was, I was taking care of a person, overprotective kind of person. So I was the kind of a scenario you told me that you went on like over those who you love, and you go over and beyond your limits. You can go and to protect someone. So that was there within me. I also went through all these things to protect our people or kind of things. So that was not required. And Yeah. these kind of things I can relate to, but not exactly right now. I cannot elaborate any one instances. Yeah. Overachievers trauma kind of things were there. Because When I got a major failure, I could not get up from that failure for over a long period of time. I used to cry. I used to in my bed, and no one was telling me that you are a failure. Kind of my father, my mother. So in my 12th, 11 or 12th standard, I did not achieve good marks and kind of achieve. So they admitted me into some other field. I wanted to be in the medical. So I was thinking that I cannot
meet their expectations, and I used to cry. I used to blame myself. Blaming game was there. So since then, it was like ruining my life because I was blaming myself, guilty. Yes, because you yourself has set so high standard for your own self. आपने खुद ही के Yeah, अपने खुद के स्टैंडर्ड देके रखे हुए हैं। शायद वो हाँ ये था। बचपन में शायद पेरेंट्स ने वो सिर्फ कुछ चीजों के लिए डाले हो, लेकिन आपने नहीं, आप, डांटा भी नहीं, मुझे डांटा ही नहीं, लेकिन या, फिर भी मुझे ऐसे साइलेंट ही था। साइलेंट मोड में ही मुझे लगा कि हाँ मेरे ऊपर प्रेशर आ गया, और मैं रोती थी, पूरे टाइम रोती थी कि मैंने कुछ नहीं। और उसके बाद मेरी फेलियर्स होते रहे। मैं बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू मैनेज दैट सिचुएशन, और मैं किसी को बोल भी नहीं पा रही हूँ। घर में हम लोग इतने लोग हैं, फिर भी नहीं बोल पा रही हूँ। तो मुझे लग रहा है कि अंदर जो चाइल्ड होता है ना, इनर चाइल्ड, वही वाला, yes, ये तो आई ओवरकम दैट। आई अचीव्ड, आई गॉट माय डिग्री, एमसीए एंड ऑल एवरीथिंग। बट वो अंडर प्रेशर, वो जरूरी नहीं था। वो दिखाना था कि लोगों को, अगर इफ आई बी दिस, पीपल विल लाइक मी। वही वाली yes, चीज जो कल बोली थी। yes. तो वो सारी चीजें आई ओवरकम नाउ। वो सब चीजें तो चली गई है, इट्स पास्ट। और हो भी सकता है कि अंदर होता है, हाँ, इट्स इन माय इनर चाइल्ड, वो भी। लेकिन मैंने काफी बुक्स पढ़ के भी इसको रिलीज किया था। तो ये स्ट्रॉन्ग वाला जो होता है ना, और प्रोटेक्टिव, निशा, आई टेल यू वन मोर क्वालिटी ऑफ देयर, दे आर ऑलवेज इनटू उनको ऐसा लगता है कि हमें स्ट्रांग ही रहना है। ये लोग वल्नरेबल कभी होंगे ही नहीं, एंड दे आर टायर्ड। वो खुद थक चुके हैं स्ट्रांग रह के। वो खुद हाँ, इंटरनली दे आर टायर्ड ऑफ बीइंग पुटिंग सच अ स्ट्रांग फेस, एंड दे जस्ट फील लाइक यार कभी तो हमें भी वल्नरेबल हो जाने दो, कभी हमें भी फेलियर हो जाने दो, कभी हमें भी एक्सेप्ट कर यस, लो। बट दे डोंट डिनाई। वो लोग खुद अपने ऊपर इतना इतना मतलब इंटरनली वो लोग थक चुके हैं वो जिम्मेदारियां लेके, वो स्ट्रॉन्ग फेस रख के, वो अचीव करके 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 करके, बट they just don't allow their emotions, especially the weaker emotions of vulnerability, weaker emotions of fear, weaker emotions of anything to just shared, because उनको लगता है अगर हमने ये शेयर कर ली तो सामने वाला, अरे ये तो इतनी कमजोर है। I'll give you example. Like I have my this business, I have my another business, I am in the job, but अगर आई एम स्टिल नॉट गुड एट टेक्नोलॉजी, मेरे को टेक्नोलॉजी बहुत फ्रीक नहीं है, नॉट अ टेक्नोलॉजी फ्रीक पर्सन। एक पर्सन है जो बोल रहा है कि मैं किसी को बोल चुकी है मेरे को ना, मतलब अभी भी अच्छे से नहीं आता इंस्टाग्राम थिंग्स एंड रील्स एंड ऑल दोस थिंग्स मुझे बनानी नहीं आती है। एक पर्सन जो बोलता है अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं आता तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा या सिखा दूंगी, वर्सेस अरे तुम तो इतना सब कुछ करती हो, तुम्हें ये नहीं आता। दो चीज है। पहले वाले के बारे में शायद मैं बोल दूं कि मुझे नहीं आता तो आई एक्सेप्ट इट, वो बोले ठीक है आ जाओ मैं तुम्हें सिखा दूंगी, वर्सेस सेकंड का टोन है कि अरे तुम इतना सब कुछ करो तुम्हें ये नहीं आता। इमीडिएटली मेरा वहां पे ट्रिगर हुआ सेल्फ एस्टीम, इमीडिएटली मेरा मेरा ट्रिगर हुआ मेरी वर्थ, इमीडिएटली मेरा ट्रिगर हुआ मेरा रिस्पेक्ट, एंड आई फील लाइक व्हाई इवन आई एम टेलिंग दैट पर्सन, ये मुझे जज कर रहा है, ये मेरी कैपेबिलिटीज के ऊपर डाउट कर रहा है या कर रही है इसको मेरी, एंड इमीडिएटली आई विल एंड अप फीलिंग एंगर, एंगर रेज आएगा मेरे अंदर, एंगर आएगा मेरे अंदर कि अरे यार इसको क्यों बोला, अगली बार से मुझे बोलना ही नहीं है इसको। इमीडिएटली वो रिश्ता वहीं पे खत्म, द टॉक immediately stopped over there. This is how it happens with the overachiever traumas and the people who are just strong. That's one thing. Anybody else want to share anything? Yes, Nitin, do you want to say anything? Because you're unmute. Yogesh, how about you? Dhamratna, कुछ मिला, वैल्यू मिली? आप म्यूट है योगेश, हम रत्नाओं की बात करते हैं। Hi, एक्चुअली मैं सबसे फैमिली में छोटा हूँ, और मेरे मेटरनल अंकल है, वो बहुत ही उसने हमें टेक केयर बहुत ज्यादा की है, पढ़ाई वगैरह सब में। तो वो टोंट वाला जो आपने बोला ना, वो हमने बहुत फेस किया लाइफ में कि भाई अभी तो तुम चार चार लोग हो के मैं जितना टैक्स पे कर रहा हूँ उतना भी तुम कमा नहीं पा रहे हो। सो इट वाज आई थिंक 10 year बैक, आई एम जस्ट ट्रिगर राइट नाउ। सो 10 year बैक वाली बात कर रहा हूँ, तो उसमें वो फील हुआ था। बट आई यूज टू शेयर विद थॉट्स विद माई सिबलिंग्स। सो वहीं से मुझे बहुत सारा हिल मिल जाता है, विच यू आर टॉकिंग अबाउट। सो कभी ब्लॉक नहीं हुआ, बट इंटरनली शेयर करते थे, और वो स्ट्रॉन्ग में मूवमेंट में भी हेल्प करता है। आई थिंक कभी कभी हेल्प कर भी रहा है ये चीजें कि भाई
किसी ने टोंट मारा उस पर वर्क कर रहे, बट वो एज अ ब्लॉकेज हो जाए तो बहुत खराब रीत से शायद जा सकता है। सो साइमल्टेनियसली हम लोग शेयर करते थे, और उसके ऊपर फिर हम लोग अपनी स्टडी में या अपने वर्क कल्चर में भी इम्प्लीमेंट करते थे। आई थिंक ये इम्पेक्ट करता है, ट्रिगर करता है ये सब चीजें जो, बट आई थिंक इट्स गुड फॉर मी टू, मैंने उसको ओवरकम किया, या उतना सर पे चढ़ने बहुत याद करने में टाइम लगा कि ऐसी कोई चीजें होती है। सो आई एम इन गुड प्लेस इन दिस। मुझे फैमिली से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो उतने ज्यादा कुछ प्रेशर वाली लाइफ नहीं थी मेरी, और मुझे बॉसेस भी बहुत अच्छे मिले, तो मुझे आई थिंक अच्छे रिलेशन रहते हैं सारे के साथ। आई एम नॉट इन ट्रॉमा एट ऑल, आई एम ओके विद दिस। सो दिस इज वन थिंग, मतलब एक चीज है कि वो कहीं ना कहीं टॉन्ट मार दिया, ये कर दिया, दैट इज समवेयर यू वर इन अ पोजीशन टू चैनलाइज दैट टॉन्ट इनटू हेल्दियर वे। आपने उसको हेल्दियर वे में यस यस यस। चैनलाइज करके, आपने उसको ओवरकम करके आप यू बिकम सक्सेसफुल। बट जस्ट इमेजिन अ 5 year old चाइल्ड, अगर ये 4 5 साल का उनका बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, उसको बोला जा रहा है तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हारी उम्र में तो मैं ये कर रहा था, ऑल दैट टाइम द चाइल्ड माइट फील कि आई एम अनवर्दी, आई एम नॉट कैपेबल इनफ ऑफ डूइंग दैट थिंग। तो दिस इज समथिंग, मतलब ये पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। इट इज अ वेरी गुड थिंग कि आपने आपकी सिबलिंग्स में इतनी मतलब बॉन्डिंग है कि आपने एनालाइज करके उसको पॉजिटिव चीज में निकाल दी। बट दिस इज विद द केस ऑफ समथिंग जिसने नहीं प्रोसेस किया है। प्लस एडिशनली जस्ट इमेजिन योरसेल्फ हाउ लॉन्ग आप कितना, जैसे आप बोलो कि टैक्सेस बता, बट आर यू इन कांस्टेंट कंपैरिजन की हाँ मैं आप आर यू ऑलवेज लुकिंग कि मुझे आपने बोला जो केयर टेकर अंकित रहे हैं, आप हमेशा उनकी एप्रिसिएशन देख रहे हो, आपको लगता है कि मैं तभी सक्सेसफुल हूँ जब उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया। आर यू लुकिंग फॉर rather are you measuring your success based on the appreciation of your caretaker or your uncle? Are you still into that thing? No, no, no. Okay, then Not like that actually. Actually we know कि his उसका बैकग्राउंड अलग है, हमारा बैकग्राउंड, हमारी समझ अलग है, हमारे वेज ऑफ वर्किंग अलग है, तो उसकी एक्सपेक्टेशन है, बट वो मुझसे रिलेट करे नहीं करे, आई डोंट केयर, क्योंकि हो सकता है उसके एक्सपेक्टेशन गलत भी हो। सो आई एम नॉट बोदर अबाउट दिस, दैट्स that's very good thing that you have come out of that thing and you're not flogging your life based on somebody else's expectation. yes yes. Yeah, that's very good thing. Anybody else want to share anything from chat? Let me look at the chat. Almost all, Dhamrata is telling good morning. Okay. Almost all mentioned today, especially the overachiever trauma. People face a trauma, the rescue or protected trauma. Overachiever. Yes, मैं सारे ये सारे overachiever तो बहुत ही common है, बहुत मतलब very common. We just don't feel, we just don't celebrate our success. एक milestone मिला, तुरंत अब क्या करना है? वो time ही नहीं देते हैं कि ये तो achieve किया, just celebrate. We just always feel like अब क्या, अब क्या, अब क्या, अब क्या, अब क्या. And that's the reason we feel up, having a lot of issues with respect to our bodies. Anything? And Bhagyashri, do you want to share anything, Bhagyashri? आपकी आवाज नहीं आ रही भाग्यश्री। नहीं, अब अभी भी नहीं आ रही है। We can't hear you. अब आप म्यूट हो गए हो। Okay, she just lost the connection. Khushi, do you want to see Swarupa? Good morning, Swarupa. Do you want to share anything? Pragati, Khushi, Shweta, Nisha already shared. Archana, good to see you all. Okay, if no one is there, I'll just start with the healings. Just let me know when my sound and music both are okay. Both are
audible? Just let me know that it is audible. Okay, thank you. Thank you for the confirmation. Now we straight away enter into the healing. Thank you. Thank you so much, Nitin. Thank you so much, Kushi. And just close your eyes and sit comfortably. Take a deep breath. Sit comfortably. Exhale. Take a deep inhale. Spine straight. And begin our focus on the breathing. For the next 10 minutes, just allow yourself to present into your body the natural rhythm of the breath. Take a deep inhale. Hold it for 4, 3, 2, 1, and exhale. Slowly, 4, 3, 2, 1. Hold your breath for 4, 3, 2, 1, and take a deep inhale again. 4, 3, 2, 1. This is called as box breathing, and we will repeat it one more time. Take an inhale. 4, 3, 2, 1. Hold it for 4, 3, 2, 1. Exhale slowly with the count of 4, 3, 2, 1. Relax. Take a pause of 4 seconds before inhaling. 4, 3, 2, 1, and just relax. Come back to normal breathing. Allow your body to breathe normally. Inhale and exhale. As you do, just watch the rise of your chest and the fall of your chest while inhaling. Inhale. Feel the rise of your chest. Shoulders going up. Exhale. Chest going down along with your shoulders. Sometimes we feel like we cannot move forward because something in our life has entirely gone off the train. Perhaps it's the feeling of stuck or just having a bad day at work. Maybe the inner voice of you need not being heard, or you have to complete this task is not letting you to rest. Task could be going to the office or cooking for your family. You are extremely tired, but you want to go and take that step. With this healing today, we set an intention to start our brand new day on a clean page to start over. This healing session will help you become more focused in touch with yourself, your body, and your emotion. This is a true act of self-love and self-worth and a compassion towards yourself because you deserve it.
Allow your muscles to release any tension with each inhalation. Inhale the confidence, the self-love. Exhale any muscle tension you are carrying in your shoulder or lower back or your knees or just your forehead muscle. Bring your focus on the eye muscles. They are clenched. Just relax them. They deserve this love of yours. Unclench your jaws and your facial muscles for all the thoughts running into your mind that how I'll do that or I have to do. This is my to-do list. Just give your body the love. Notice all those body parts that might still be holding some tension. Just quickly scan your body. Is there any tension in your feet? In your calf muscles, knees, your thighs, lower back, chest, some organ, heart, liver, stomach, your hands. Maybe your shoulders are feeling a little bit stiff. Just relax them. Relax the shoulder blades. Anywhere. Inhale into those areas, and as you exhale, let all the tension go away. Allow your inner stillness to take over and see every strain, every tension evaporating. You are feeling heavy as if you are totally sinking into the surface you are resting on. Allow this thing, this sinking, this heaviness to be deeply absorbed with your each and every body cell. You are safe, you are doing good, and you are at home. Now, visualize yourself in a fluffy cloud floating in the sky. Observe the thoughts that are coming to your mind. See these thoughts like a cloud floating across the sky. Accept whatever thoughts are coming. No need to judge them. No need to worry about them. And no need to stop. Just absorb. Let all the thought come. Become a cloud and be an observer of these thoughts, of these clouds, without any judgment. Don't get involved into them. Just observe. Just observe. And when you feel ready, just focus on few main thoughts that are disturbing you right now, that is causing
that worry, that tension, or it could be a happy thought also, which is keeping you and overwhelmed. Just see who all are there in that thought. Who are you with? Where are you in that thought? What place it is? What are you wearing? How's this surround smelling? With whom you are conversing? Are you sitting alone or are you talking to someone? Are you at home, in office, on beach? Where are you? Or you are just simply sitting in a room? Become aware of these thoughts and the feeling they are conveying. Whatever the feelings are there, happy, sad, joy, anger, resentment, grief, hurt, or the feeling of being loved, respect, cared, cheered, gigglings, laughing, whatever the feeling, allow the emotions to surface. Accept these emotions and ask yourself, what was the good thing in that thought because of which I'm feeling a happy emotion? Or if you are feeling grief, hurt, or sad, just ask yourself what went wrong. Ask yourself, why do these thoughts create such an emotion in me? Allow the answers to come naturally. Ask yourself, does this have a big impact in my life? If yes, then why? And if no, simply move to some other thought which is worrying you. You might not have picked the right thought. If you are looking at some destinations or some of yourself as a success point, ask yourself some image you are having. What is stopping you from getting where you want? What is there in your present circumstances which you see as a block to reach toward that particular success image of yours? The success image would like peace. The success image would look like happiness. The success image would look like a healthier relationship. The success image would like a healthier body. The success image would look like a particular bank balance in your account. The success image would look like a destination holiday. A success picture would look like trekking or traveling the world without caring for your finances. Just
give that detail to you. What does that success look like? It could be the CEO of some company. It could be inspiring so many people. It could be waking up every single day with the gratitude messages flooded in your inbox, telling how beautifully you touch the lives. What does that success picture look like to you? And now, just ask yourself, what is stopping you to reach to that success image? Is it the responsibilities? Is it the financial securities? Is it the doubt you are carrying into your head? Is it the permissions you want? What is that thing? Or your own belief system? Ask yourself, could you do something differently today? As your mind started giving you the options, visualize yourself holding a notebook in your hands, and you are organizing all of these action plans. The answers you are getting is the next step you shall be taking. Just organize them. This is your strategy to start. You are feeling excited, you are feeling ready. And as you got your answers, repeat the following affirmations out loudly in your mind, or just repeat it silently. I am moving forward today with the life I am excited to live. I am living forward today with the life I am excited to live. I understand that life is complex and I have to let go. I understand that life is complex and I have to let go of few things. But I also know I will always find my way of fulfillment because I'm capable enough. I also know I will always find my ways of fulfillment because I'm capable enough. It's easy for me to let go of things and start afresh. It's easy for me to let go and start afresh. I'm preparing for the future, letting go of the past and living in the present moment. I'm preparing for the future, letting go of the past, but I'm living in the present. Now, visualize a white, bright ball of light right in front of your face. And with the next inhalation, with the next deep breath, inhale
this light, from this ball of light. As you inhale, visualize the bright light going into your nostrils, into your windpipe, just reaching your trachea, reaching the bronchitis, reaching the lungs, reaching the alveoli. From there to the circulatory system, it reached just to your heart. Now, with every thumping of your heart, this bright light has just traveled to your arms, to your chest, your liver, pancreas, intestine, your hips, thighs, inner thighs, knees, calf muscles, feet. The blood just pumped, the shoulder blades, lower back, mid back, upper back. See the light traveling to your neck. Look at your hands. They are just radiating the same light. The fingertips, the nails. Your skin is becoming that light. As you are inhaling this bright light, with the next breath, it just reaches your chin, covering your jaws, nose, your cheeks, eye bones, eyes, forehead, head, and ears. And now you have become that bright ball of light. And as this light is traveling, it has just cleansed off all the negative stuck energies which you were holding into your muscles without even realizing. From head to toe, you are surrounded in this beautiful bubble of bright light where everything you see is crystal clear. This bubble is having the surroundings of exactly the image which you have visualized yourself as in your success image. See your people laughing. They are the same people who were there with you in your success image. See yourself free. You might feel like floating into this bubble. Please allow yourself to float. You are home. You are safe. Allow the healing to deepen. You deserve it. You are worth it. You are capable of it. And just see, bring your attention to your skin, the layers, each and every cell. There's a whole ecosystem inside you. Trillions and trillions of cells are forming even without your knowledge. They are regenerating, replacing your old cells. But this time, these new cells are full of energy, full of this white light, and full of vitality. These cells are having the same light and they are happily running where the healing is required. Just see the exchange of the bad energies, the negative energies. These lights is just traveling to those areas
The darkness is gone, and each and every cell, each and every body part of yours is beautifully beaming with this bright light. And as you are beaming with this bright light, a bubble is beaming with a bright light. The people are beaming with that bright light. Your health, relationship, career, everything is bright. Time to come to the world we are living. Become aware of the surface where you are sitting. Become aware of the clothes you are wearing, what color you are wearing, the texture of your clothes on your skin. Become aware of the fan or any external air you are having feeling right on the face or on your body. Become aware of your presence in your room. Look around your room. What are the things are there in your room? Wriggle your fingers, wriggle your toes, rub your palms, place it on your face. Just gently feel the touch in the energies, and whenever ready, open your eyes with a beautiful smile that it's a brand new day and I'm worthy of creating whatever I want. All right, so thank you so much, all of you, to be present here till now. It's 7. I'll end up this session. Please do share whatever your experience, and if you're open to share now, anyone can quickly share. I'll share the assignments to be done, and it needs to be shared. So, were you able to feel? How was you? Were you there, Kushi? Where were you in this world or some other world? In this world and in two different world, one in past and one in the thoughts of Job, like Yeah. So, were you able to see कि कहाँ जाना है? not exactly, but I imagine the structure and people around me and office. That's good. So that means अभी currently आपको अपनी money frequency के ऊपर काम करना है. The job, as you are seeing कि maybe job is the one factor जो आपको worry कर रहा है, जिसकी वजह से आपके thoughts इतने clumsy हो चुके हैं. So start looking for the job opportunities, and this time whenever job opportunities are coming, just apply it without ये feeling के साथ मत जाना कि मेरे को select नहीं किया तो क्या हुआ. Don't give it that, go with that, application उसके साथ मत डालो. Just bless that application that I am the best one. मेरे को मिलने ही वाली है. Have that good energy with that application. And anything else, anybody else want to share? Or shall I end the meeting and I'll open the group for the assignment? I have to stop. All right, Nisha, no worries. I know we are late. And have a great, fabulous day and see you all tomorrow. Bye-bye. Thank you, Sonia. More power to you. Thank you very much. Thank you, Nisha. Thank you. Thank you. You have a bright day. Same to all. Right, Great day, great day.